Assalamu alaikum everyone. Here today we will be discussing periodic classification of elements in this lecture. Hope आपको इससे पहले वाले lectures अच्छे लगे होंगे, उन पे अच्छा सा comment भी किया होगा आपने। तो ये आपकी जो अथवास सीरीज है उसका थर्ड लेक्चर है केमिस्ट्री पार्ट का, जिसमें हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हमको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, वो देखेंगे हम फर्स्ट व्हाट इज पीरियोडिक टेबल। And periodic table होता क्या है? It is a tabular method of displaying the elements that are present in such a way that the elements having similar properties occur in the same vertical column or any group. So होता क्या है कि it is a table. We can say it is tabular form of separating the elements in such a way that those elements which are having same properties, they come under the same vertical column or group. That is what basically this classification is. And now the question arises, we have elements, why we are going to classify them? So the need is that when we have so many elements, we have almost 118 elements present at the moment. So studying all these elements one by one will take too much time. And in order to systematize the study of these elements and their compounds mainly, we classified these 118 elements into groups, and classified these into groups so that they come under the same column where they have similar properties. We need to study only one element, or we can say a topmost element, and see the trend of the properties that follows for the other elements in the same group. That is why the classification is there. So in order to simplify and systematize the study of elements and their compounds, they are classified into groups and periods. So that is why we are classifying them into vertical groups and horizontal columns like these. We will be seeing in next slide is also these vertical, they are called groups, and these horizontal rows are called periods. Now there were too many attempts in classifying the elements into so many by so many scientists. First of all, it was Döbereiner, Johann Wolfgang Döbereiner, who was a German chemist. He tried to arrange the elements with similar properties into groups. He tried to arrange the elements with similar properties into groups. At the moment when he tried this, there were only few elements present, so he had to classify only that. But he could only found these triads, a group of three triad. The atomic mass of the middle element of this triad was roughly the average of the atomic mass of the other two elements. That is on which basis he classified the elements into these triads. Triads are basically what? A group of three. A group of three. That is why they are called Döbereiner triads. He took these elements and classified them and made group of three, in which the middle element, here we have nitrogen, phosphorus and arsenic. Here this phosphorus has atomic mass that is nearly average of this 74.9 plus 14 divided by 2. What is this? 4 plus 4, that is 8. 1 plus 8, 88.9 divided by 2, which comes out to be 44. He was almost not accurate, but that was roughly the average. This is too far away from the average, but we can say roughly it is. He classified these into group of three, but he could only find only these three groups at the moment when he tried to classify these. Döbereiner could only find three tides from the elements at that time that were known, so he could find only these three triads. And after that came a new scientist, English scientist. He was John Newlands. John Newland tried what? He tried to arrange the elements in order of increasing atomic mass. Increasing atomic mass में इसने
जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे उस टाइम पे, तो उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे इसने अरेंज कर दिया. He found that the eighth element had similar properties to that of the first element. जब उसने एटॉमिक मास पे अरेंज किया एलिमेंट्स को into horizontal rows, he found that the eighth element has the similar properties with first element, and that these are sometimes, this is called law of octaves. This has the same trend as in the musical notes you can see here: sa, re, ga, ma, pa, da, ni, and eighth is again sa. Similarly, here he found that the eighth element, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, the eighth element has same properties as the first element, and this law is called the law of octaves, and it was given by which? By whom? John Newlands. He could classify these elements, but he had some drawbacks in it. He started with element having the lowest atomic mass. तो स्टार्ट किया उसने जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था, and that is hydrogen, and ended at thorium, which was the 56th element present. 56th element जो था थोरियम, उस पे उसने खत्म किया किसको? इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, और ऐसा एक टेबल तैयार कर दिया. लेकिन इसमें जो खामियां थी वो ये थी कि इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. उसने चूंकि उसने ये तो बना दिया टेबल, लेकिन अप्लाई जो ये हो रहा था, जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, वो खाली कब कहाँ तक हो रहा था? वो खाली कैल्शियम तक हो रहा था. As after calcium, every eighth element did not possess properties similar to that of the first element. तो जो कैल्शियम के बाद था, वहां से एलिमेंट्स ने इन प्रॉपर्टीज को इनके साथ आफ्टर एट्थ एलिमेंट ये ट्रू नहीं था. तो दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन, और वी कैन से ड्रॉबैक ऑफ व्हाट? दिस लॉ ऑफ octaves, Newland's law of octaves. Also, it was assumed by Newland that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. तो उसने ये जो क्लासिफिकेशन की थी, उसने ये सोच के किया था कि जितने भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो उसने ये कहा कि खाली 56 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाएगा. उसने कहा कि 56 we have and that is it, we are not going to have any more. But later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. लेकिन जब टाइम गुजरता गया तो हमारे पास नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और वो इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के टेबल में फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज दे वर समवट डिफरेंट. दिस वाज द सेकंड ड्रॉबैक. In order to fit the elements into his table, this is the third one. तो उसने क्या किया? कई जगह पे उसने अपने टेबल में ये दिखाने के लिए कि आठवां एलिमेंट मैच कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, उसने एक एक स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स भी डाल दिए. Newland adjusted two elements in the same slot, but also put some unlike elements under the same slot. इतना ही नहीं कि उसने एक एक स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स डाले, बल्कि कुछ ऐसे स्लॉट्स में ऐसे एलिमेंट्स डाले जिनकी प्रॉपर्टी पिछले जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी. एज यू कैन सी, cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these two elements. तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, कोबाल्ट और निकल को उसने किस वाले स्लॉट में डाला है? एक तो दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाला है, और ऊपर से उनको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन इनके साथ डाल दिया है. दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम these are called halogens, fluorine, chlorine, bromine. Similarly, iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. Also, जो आयरन था Fe, ये किन के साथ? कोबाल्ट और निकल के साथ होना चाहिए था, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच होती है, लेकिन उसने कोबाल्ट और निकल को इसके साथ रखने के बजाय उसको इस वाले स्लॉट में डाल दिया था. दिस वाज आल्सो
the limitation of Newland's law of octaves. With the discovery of noble gases, law of octaves become irrelevant. तो जब हमारे पास क्या noble gases की डिस्कवरी हो गई तो उनके लिए हमको अलग से एक सेपरेट एक कॉलम देना पड़ा। तो वो क्या हो गई, वो सबसे बड़ी एक लिमिटेशन हुई किसकी, क्योंकि दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, क्योंकि हमारे पास जो नोबल गैसेस थे वो इस वाले टेबल में कहीं पे फिट नहीं हो रहे थे। These were the limitations of Newland's law of octaves. This was the second attempt in classification of elements. Coming to the third, that was given by Mendeleev. Mendeleev tried to classify the elements into periodic table. He tried some periodic table. He tried to draw a periodic table in which the elements are arranged according to their properties. Mendeleev's periodic table is based on physical and chemical properties of elements and their atomic masses. तो जैसा कि आपने देखा पहले डॉबर्नियर ने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट्स का एक ट्रायड बना दिया, जिसमें बीच वाले एलिमेंट की का जो एटॉमिक मास था दैट वाज ऑलमोस्ट ऑन एवरेज ऑफ द अदर टू। देन केम न्यूलैंड, उसने कहा कि एट्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के प्रॉपर्टीज से मिलता जुलता है, तो उसने ऐसे एक क्लासिफिकेशन दी। लेकिन उसके बाद मेंडलीव जो आया तो इसने कहा कि मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों को देख के आपको एक टेबल देता हूँ जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे। एंड ही आल्सो कंसिडर्ड व्हाट एटॉमिक masses for this classification. He gave a periodic law. What was his periodic law? He said that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. तो उसने कहा कि किसी भी एलिमेंट की चाहे कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर वाज नॉट दैट कंसिडर्ड एट दैट मोमेंट। तो उसने कहा कि these all properties whether an element makes compound with any other element, these are all properties of what? This is property of atomic mass. Now periodicity of properties. अब हम पीरियोडिक पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक होता क्या है। तो पीरियोडिक इज व्हाट रिपीट्स, which repeats itself, or wherever we can see any repetition we say that it is periodic. The repetition of properties of elements after such a regular interval is known as periodicity of properties. When we see any properties of any element or anything else that is repeating after some interval or some regular interval of time, we say that it is repetition or it is periodic. Now, merits of Mendeleev's periodic table. Mendeleev gave a periodic table in which he classified elements based on what? Based on this atomic mass. This was the periodic table given by Mendeleev at the moment when he tried to classify the elements. He classified elements based on the compounds that they made with oxygen and hydrogen also, and he classified them according to their atomic masses. And some merits or we can say properties that we derived from that table were Mendeleev left vacant places in his table which provided an idea for the discovery of new elements. मेंडलीव ने क्या कहा कि इसने अपने जो पीरियोडिक टेबल जो इसने बनाया तो इसने पहले क्या किया, ही ट्राइड टू मेक ए टेबल बाय, इसने क्या किया कि जो भी एलिमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट थे उसने एक कार्ड्स लिए, उस पे हर एक एलिमेंट का सिंबल लिखा, उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ कैसे वो कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपाउंड बनाता है और उसका एटॉमिक मास, हर एक एलिमेंट जो भी प्रेजेंट था वो लेके उसने आप मानो कि वॉल पे चिपका दिए अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज। नाउ जिस जिसके भी प्रॉपर्टीज मिलते जुलते थे उसने इनको एक ही कॉलम में भर दिया। एंड कहीं कहीं जगह पे इसने क्या वैकेंट प्लेसेस छोड़ दी, किस लिए? ही गेस्ड दैट देयर विल बी डिस्कवरी ऑफ सम
न्यू एलिमेंट्स। तो इनकी जगह पे जो ये खाली जगह मैंने रखी है, इनकी जगह पे नए एलिमेंट्स आएंगे दैट आर सेटल्ड टू बी डिस्कवर्ड. For example, he said Ika boron, Ika aluminium, and Ika silicon. He left these places for before boron. He left some place and Ika aluminium and Ika silicon. These elements were later on discovered also, and he had left actual places for them. Mendeleev's periodic table was predicted several undiscovered elements on the basis of their position in Mendeleev's periodic table. मेंडलीव ने क्या कहा, प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. तो ये जो इक्का बोरान, इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन जो भी एलिमेंट्स थे जो उसने कहा कि आगे जाके ये डिस्कवर हो जाएंगे, तो इतना ही नहीं कि इसने कहा हो जाएंगे, इसने कहा इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, किस बेसिस पे, इनकी पोजीशन क्या थी, किसमें, इसने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें इनकी पोजीशन क्या थी. It is useful in correcting the doubtful atomic mass of some elements. और इससे क्या हुआ था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हमारे पास थे जिनका हमें एटॉमिक मास अच्छे से मालूम नहीं था, जिन पे डाउट था कि इनका एटॉमिक मास यही है या कुछ और है. तो that also was corrected using Mendeleev's periodic table. Noble gases could accommodate in Mendeleev's periodic table without disturbing the periodic table after discovery. तो जो हमारे पास नोबल गैसेस आए थे जब हमने उसके बाद इनको डिस्कवर किया, तो दे वर अकोमोडेटेड इजीली इन ए सेपरेट ग्रुप, क्योंकि हमने उससे जो जब हमने दीज नोबल गैसेस डिस्कवर किए तो उनके लिए एक अलग सा ग्रुप बना के उनको उसमें डाल दिया, और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था दैट रिमेन्ड एज इट वाज. And not only merits but there were some limitations too. Limitation were that no fixed position for hydrogen. हाइड्रोजन के लिए कोई खास पोजीशन इसके पीरियोडिक टेबल में नहीं थी. नो करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो हाइड्रोजन के लिए जो इसने पीरियोडिक टेबल दिया था उसमें इसकी खास कोई जगह नहीं थी. That was the first limitation of Mendeleev's periodic table. For example, position of hydrogen with alkali metals and halogen 17th group. क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम देके that could act as alkali metal and ये एक एटम लेके that acts as this we can say halogen. तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज है. तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था इसमें इसकी पोजीशन दैट वाज नॉट करेक्ट. This was the first limitation. Second limitation was that no place for the isotopes. Isotopes are those elements which have same atomic number but different atomic mass. As we know that he classified the elements on the basis of what? Atomic mass. तो जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए था कि हर एक आइसोटोप के लिए अलग जगह होनी चाहिए थी. लेकिन क्या हुआ, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें ये हम बता सके कि ये आइसोटोप्स के लिए अलग जगह है. होनी चाहिए थी बट देयर वाज नॉट. व्हाई? बिकॉज होनी क्यों चाहिए थी? बिकॉज ही क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, but there was not any such position in his periodic table, so we say that this was the second limitation of Mendeleev's periodic table. And no regular trend in atomic mass was seen. तो दूसरी बात ये थी कि कोई भी ट्रेंड नहीं था, मतलब जो पीरियोडिसिटी आ रही थी किसमें, पीरियड दिस एटॉमिक मास में, वो कोई रेगुलर नहीं था. देयर वाज नो रेगुलर ट्रेंड. कहीं पे जो है देखिए, elements with lower atomic mass before higher atomic mass. Example, nickel with 58.7 was before 58.9 placed in his table. Nickel 58 point, cobalt, this has higher atomic mass than nickel. ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे cobalt with higher atomic mass is as come first than this nickel. So this was also a
limitation of Mendeleev's periodic table. Now उसके बाद ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिस वाज एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा पीरियोडिक टेबल था जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे थे प्रेजेंट थे जो डिस्कवर हुए थे वो सारे क्लासिफाई हो गए थे इसके लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी जैसे यही आइसोटोप्स का था हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी हायर एटॉमिक मास एलिमेंट्स वो पहले थे लोअर एटॉमिक मास एलिमेंट्स से लेकिन फिर भी कुछ हद तक मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन दी थी वो बहुत ही अच्छी थी एज कंपेयर टू डॉबरनियर ट्रेड्स एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. Then came what we call the modern periodic table, and it was given by whom? Henry Moseley in 1930. Henry Moseley showed that atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass. तो जो हैरी मोजली था उसने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है दिस एटॉमिक नंबर दिस इज मोर फंडामेंटल देन व्हाट एटॉमिक मास एटॉमिक मास में हमने देखा मेंडलीव्स में कि कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था एटॉमिक मासेस में लेकिन जो एटॉमिक नंबर है हैरी मोजली ने बताया कि ये एटॉमिक मास से दिस इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास अगर हम इसके बेसिस पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो दैट विल प्रूव फ्रूटफुल फॉर अस we can classify almost every element on the basis of that and we can place also we can give some space for the elements that are yet to be discovered so Henry Moseley gave modern periodic law, which states that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Just there is one change that is atomic mass की जगह पे atomic number आ गया ये किसने कहा ये कहा हैरी मोजली ने इसने कहा कि जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट की दे आर ड्यू टू द periodic function of their atomic number. Modern periodic table is based on atomic number of elements. तो इसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आजकल देखते हैं वो दे दिया किस बेसिस पे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लेकिन ये एटॉमिक नंबर होता क्या है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट तो हम जानते हैं कि जो भी एटम है that consists of protons, neutrons, and electrons. These are the three species that are present in an atom. Protons जो nucleus में होते हैं, neutrons are also in the nucleus and electrons revolve around the nucleus. These are negatively charged, these are positively charged, and neutrons are neutral. So the number of protons present in the nucleus of an atom is what we call atomic number. Basically, an atom is neutral as a whole, so electrons and protons are equal in number. But we take the proton number because the electrons can be gained or shared, or we can say in chemical bonds they are given or taken. They may be higher in number than protons, so we take protons here. Atomic number is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom. This atomic number is more fundamental than atomic mass and it was stated by Henry Moseley in 1913. And on this property, the modern periodic table that we see in our books today is based on this atomic number. Modern periodic table consists of 18 vertical columns known as groups जो हम देखते हैं हमारे किसमें जो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स है जहाँ देख सकते हैं दीज वर्टिकल कॉलम्स 3 4 5 6 7 ये सारे these are called what groups and these are called what
and 7 horizontal rows known as periods. तो vertical columns को हम क्या कहते हैं? These are called groups and horizontal columns are called periods. There are 18 vertical columns. That means we have 18 groups in our periodic table and 7 rows that are called 7 periods present in the periodic table. On moving from left to right in a periodic table, the number of valence electrons increases from 1 to 8 in elements present. Valence electrons are the number of electrons present in the outermost shell. Number of electrons present in the outermost shell. जो सबसे बाहर वाली शेल एक एटम में होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कॉल्ड व्हाट they are called valence electrons and the number of valence electrons increases from 1 to 8 in the elements. जब हम लेफ्ट से लेफ्ट फ्रॉम हाइड्रोजन दिस साइड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड हम जब मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 से कहां तक बढ़ जाते हैं 8 तक. On moving from left to right in a period, number of shells remain same. This in a single period जब हम मूव करते हैं from left to right, उसमें हर एक एलिमेंट में सेम नंबर ऑफ शेल्स चाहे के एल एम एन जितनी भी यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सब सेम रहती है. अगर फर्स्ट इस वाले एलिमेंट में के शेल है खाली तो दूसरा जो एलिमेंट होगा उसमें भी खाली के शेल होगी. ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल increase. All the elements of group of periodic table have same number of valence electrons. लेकिन जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ती जाती है लेकिन जो valence electrons है they remain same. In the outermost shell they have the same number of valence electrons. These are the things that we need to grasp from this slide, or we can say we have to understand these things और हमको इनको याद रखना है आगे वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज और द ट्रेंड्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो हमको पढ़ने से पहले ये चीजें याद होनी चाहिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम but number of valence electrons present in the outermost shell, that is valence electrons, they increase from 1 to 8, but number of shells remain same. And similarly on going down a group, number of shells increase but number of valence electrons remains same. They have the same number of valence electrons present in these outermost shells. होप कि यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा वो समझ आ गया होगा. We will take another lecture of this that will be of minimum 25 to 30 minutes in which we will be discussing the properties or the trends that we see in the modern periodic table, and we will come up with that video shortly. Hope so आपने enjoy किया होगा. Kindly subscribe this channel. एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इन पे अच्छा सा रिएक्ट भी कर दीजिएगा. थैंक यू. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.